So, hello guys. First of all, थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो कमेंट्स। बस उसमें एक दिक्कत रह गया था कि मेरा जो वॉइस था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि इस वीडियो में मेरा वॉइस जो हो बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बेसिकली करने वाले हैं जीएफजी पीओटीडी। पीओटीडी मीन्स प्रॉब्लम ऑफ द डे, एंड आज का जो प्रॉब्लम है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको दो वेज से एक्सप्लेन करूंगा। एक है उसका रिकर्सिव अप्रोच एंड दूसरा है उसका आपका टैबुलाइजेशन वाला जो अप्रोच है, मैं उससे ये करूंगा। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ प्रीतिश एंड आई एम फ्रॉम आस्क सीनियर एंड आई विश यू डेफिनेटली हैप्पी कोडिंग। सो लेट्स बिगिन। सो एज ऑफ ऑल आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट हम लोग के पास एक ग्रिड गिवन है ऑफ n क्रॉस m साइज एंड उसमें 0 और 1 भरे हैं और x, और अगर एक सेल में 0 भरा है इसका ये मतलब है कि आप उस सेल में जा सकते हो, और अगर उसमें 1 भरा है तो आप सॉरी, अगर एक सेल में आपका 0 भरा है देन आप नहीं जा सकते हो, और अगर आपका 1 भरा है देन आप जा सकते हो। तो बेसिकली हमको नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है कि हम कितना नंबर ऑफ वेज में फ्रॉम वन वन से लेके हम एन एम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट एन एम तक पहुंच सकते हैं। सो आप फंक्शन देख ही पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा है यूनिक पाथ्स इंट एन एम और ग्रिड यहाँ पे लिखा है। सो लेट मी बिगिन। बेसिकली जो बेसिक इंट्यूशन होगा आप लोगों का वो कैसा होगा मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। लाइक ये एक ग्रिड है, सोच लीजिए एक्स। लेट अस एज्यूम यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे 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 एक्स है, एंड दिस इज ऑफ n क्रॉस m साइज वेयर x कैन बी 0 और 1। सो बेसिकली आप सोच लीजिए ये वाला सेल में 1 है और आप यहां से यहां जाना चाहते हो। Yeah. Hello? हाँ, Yeah, I think the screen is not shared. Like, is the screen visible to others? ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। या सो नाउ इट इज विजिबल। Yes. सो बेसिकली लाइक यहाँ पे एक्स 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 है और हर जगह एक्स ही भरा हुआ है, जहां पे हमारा एक्स या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ओके, सो बेसिकली आप लोग इस वाले एक्स से इस वाले एक्स को आप लोग कब जाएंगे? जब आप पहला बात है एक्स वाले एक्स पे पहुंचे होंगे ना। इफ यू हैव रीच्ड हियर देन ओनली यू कैन गो टू दिस सेल। इज इट अंडरस्टैंडेबल? ये सबसे पहला लॉजिक है इस क्वेश्चन का, कि अगर आप इस सेल में हो देन ओनली आप इसी सेल में जा सकते हो या फिर इस वाले सेल में जा सकते हो। हमारे पास जो ऑप्शंस है दैट इज आइदर राइट और डाउन। या तो हम लोग राइट जा सकते हैं या तो हम लोग डाउन जा सकते हैं। सो इज इट अंडरस्टैंडेबल? सबको ये बात समझ में आ रही है? सो अभी हमारा जो मेन मोटो है, हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैं इस सेल से कोई भी एक पर्टिकुलर सेल, ये वाले सेल से कोई भी एक पर्टिकुलर सेल को जा सकता हूं? कैन आई गो? क्वेश्चन मार्क। एंड इफ आई गो देन हाउ मेनी वेज? मैं पहले आपको इसका एक जनरल इंट्यूशन बताऊंगा दैट इज रिकर्शन। सो रिकर्शन में बेसिकली हम बता रहे हैं, लाइक सोचिए हम लोग एक्स सेल में हैं और हम लोग को राइट जाना है। सो अगर हम लोग राइट जा रहे हैं देन व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट चेंज? इट वुड बी x+1 कॉमा z, अगर हम एक्स जेड पे है। और अगर हमको डाउन जाना है देन इट इज x z+1। ओके, सो अगर आप ऐसा सोचिए कि आप दोनों तरफ चले जाइए ना, आप दोनों तरफ चले जाइए, आपके पास ये सबसे पहला ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा
वो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2 ही तो होगा ना, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है, सो ये मैं पहले आपको इसको रिकर्शन से करके समझाता हूँ। लाइक सोचिए एक फंक्शन है रिकर्शन, जिसमें ग्रिड है, आई है, जे है, एन है, एम है आपके पास। ठीक है, सो हमारा जो पहला कंडीशन रहेगा, अगर आई, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन हो गया और जे एम माइनस वन हो गया, मतलब ये जो ग्रिड है, ये पॉइंट से लेकर ये बंदा खिसक खिसक के यहां तक पहुंच गया, वेयर दिस इज 1,1 एंड दिस इज n,n, देन वी हैव टू रिटर्न अ वन। हमको बस एक वन रिटर्न कर देना है, क्योंकि दिस इज द लास्ट स्टेप, इसके बाद हम लोग स्टेप नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ आपके पास अगर आपका आई, आई जो है आपका n माइनस वन से छोटा है, देन और अगर आपका जो ग्रिड ऑफ आई प्लस वन जे वन है, इसका मतलब क्या है, वी कैन गो, हम लोग जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। और अगर हम लोग जा सकते हैं, देन व्हाट वुड बी द रिकर्शन वुड बी ग्रिड, ठीक है, जस्ट लेट मी सी, यस, आई, आई प्लस वन जे एन एम, this would be our option 1. I think we all agree to this. The first option we will be having is option 1 equal to recursion this. Similarly, if j is less than m minus 1, if j is less than m minus 1, we have option 2 as recursion grid I j plus 1 n m. We have this option, we have this option 2. Now what have been left? Only one thing is left, that is return option 1 plus option 2. That is the answer only, because हमारे पास यही दोनों ही ऑप्शन है, इसके अलावा मैं कहीं जा नहीं सकता। तो आप ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2 ही रिटर्न कर दो। दिस इज अ प्रिटी सिंपल कोड। नाउ जस्ट लेट मी शो द कोड। आई हैव रिटन इट इन माय कंपाइलर and I will show you as running. See, this is the class solution. This is the recursion part. And I have taken the recursion function as rec. And I have made that if the pointer has reached to n minus 1 and the second pointer has reached to m minus 1, then we can return 1. Else, we can take the number of ways as 0. We can take the number of ways as 0. And if j is less than m minus 1 or j plus 1 is less than m, here it is basically 0 based indexing. And grid of I j plus 1, what I have told, can we go to the down? If we can go to the down, then your option 1 is grid n m I j plus 1. Just you increment the j by 1. Else, if I plus 1 is less than n, then grid I plus 1 j. And if you can go to the right hand side, then your option 2 would be recursion grid n m I plus 1 j. I hope this recursion is clear to everyone. And yes, modulus is given here. Modulus symbol is given here, as you can see, to just compensate the answer if it goes beyond 1e9. So, and yes, the first and foremost duty is that if from 1 1 to, if I am moving, if from 1 1 to I am moving to n comma m, then 1 1 in the grid 1 comma 1, there must not be any 0. Because अगर 0 हो गया तो मैं आगे जा ही नहीं सकता या फिर डाउन जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को इस सेल में अलाउड ही नहीं है।
आई होप इट इज क्लियर। मेरे को इस सेल में अलाउड ही नहीं है, सो मैंने इसका यूज किया। सो नाउ लेट्स जस्ट टेक द कोड एंड रन इट in our GFG compiler. Yes, see the expected output and our output is coming the same. Now let me submit. See, here it is showing a TLE, means time limit exceeded. Now the reason is why. Because the time complexity of this would be big O of 2 to the power n. The time complexity of this would be big O of 2 to the power n. Why? Because we are starting from here, we are going to two branches, then we are again moving. This is our start. Just start. This is our I, this is our J. Then we are exploring I1, J1, I2, J2. Here the it is coming as 2 to the power n. Thus it will definitely show a TLE. So what to do for this? What to do for this? We have to memorize, or we can do it by tabular method. So now let me show how to, like, how you will come into the bottom up part. So basically I have done nothing. I have just taken the recursion code and I have modified it. Basically DP, you take a DP of NM where DP of IJ shows at, if it goes to I and J point, then the total number of ways it can come up. The total number of ways on the ith and jth point would be shown by the DP part. Okay. So I have just done the same thing. I have taken a DP. I have taken modulo because it is given in the question. I have taken a DP. After that, I have done for, I have initiated everything with 0. I have initiated everything with 0. After that, if I can encounter the first cell, then it is 1. Else I have encountered the first cell as 0. Because I have told you that, can I go to the first cell? If I cannot go, then I cannot move further. Can I go to the first cell? If yes, then move further or down. So now basically you can see, I have seen, if, then I have started from the first position. Like, analyze, this is the table. If this is 1, I have checked. If the grid, if the grid at this point contains 1, so there would be only a single way in which I can move. There will be only a single way in which I can move here. I hope you can all understand. And if this portion is 1, there is only a single way in which I can move here. If this is 0, then this would be 0 because I cannot move here. But if this is 1, then there would be a single way in which I can move here. Similarly, if this is also 1, if this is 1, then I would be having only a single way, only one way to move down. Only I would be having one way to move down, that is this and this. And if this is 1, then again one way, this. Like, and if, like, suppose you assume there is nothing here and I have to move here, then there only would be a single way, that is from 1 to this place, to this place, and to this place. So the answer would be remaining same as 1. Similarly, in the case of rows, the answer would be
remaining still as 1. Now I have done the same thing here, which I have done in the recursion. For int I is equal to 1, I less than n, I plus plus. For int j is equal to 1, j less than n, j plus plus. If grade of ij equal to 1, then dp of ij is equal to dp of I minus 1 j. Why I have done this? Because if this is 1, assume this is 1, do I have a way here? Do I have a way here? If I have both the ways, then what are the number of ways I have reached here or here? And their summation would be the answer in dp of ij, because I have shown in the recursion why we are having a plus sign there, and I have taken the modulus, because in the question it is given if it crosses beyond 1e9, then we have to take the modulus. After that I have returned the last element of dp, because in the recursion we have seen that if I is less than m minus 1 and j is less than n minus 1, then we have to return 1, means at the point where we are standing. Now let me copy paste the code and just paste here. See, our output and the expected output are coming the same. Now let me submit. All the test cases have been passed. And if you have any doubt, then kindly ask me. Or also you can write down in the comment section too.